my other younger brothers who are sitting in front of me, Professor Dinesh Gupta, Bhai Joginder, and Sanjay ji, and of course I am looking after first time in my life this young lady, but I am sure कि जहाँ इतने बड़े नगीने हों उनके मध्य अगर ये विद्यमान है तो निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबुद्ध शख्सियत होंगी और भविष्य में मेरा इनसे जब भी कभी परिचय होगा तो उसकी झलक भी देखने को मिलेगी कि आचार्य में व्यवहार में उनके ज्ञान में मैं ऐसी रूप से कामना भी करता हूँ और ऐसा मेरा मानना भी। यदि किसी इंसान के पैरों की जमीन खिसकानी तो सबसे अच्छा तरीका है मित्र भाव में कि उसके बारे में इतना कुछ कहा जाए, इतना कुछ कहा जाए, इतना कुछ कहा जाए कि वो बेचारा बैठे बैठे ये सोचता रहे कि अब तेरा क्या होगा। और कुछ ऐसी मानसिक अवस्था के दौर से मैं पिछले 7-8 मिनट में गुजरा हूँ। भाई जोशी ने जो मेरे कार्य कलापों का जो लेखा ठोका इस बच्ची के समक्ष कागज में रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वास्तव में मैं हूँ, लेकिन जहाँ से इन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया होगा शायद वो किसी वेबसाइट पे किसी किताब में या किसी जगह उपलब्ध रहा होगा, वहीं से उन्होंने लिया होगा। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, बहुत ही छोटा सा, और मैं आप में से एक हूँ और आप मुझे सिर्फ इतना ही अंतर है कि बाई चांस मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरे सामने हैं, और इसीलिए मेरे लिए आपको थोड़ा सा अंतर आज के दिन है। आज के बाद फिर हम सामान्य हैं, आप जैसे ही हैं। विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही बेहतर, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल ये विषय है बात करने के लिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों के झांकना और उसके गर्भ से उन मोतियों को निकाल कर लाना, जिसने इतिहास की रचना में आपको सहयोग दिया हो, उस इतिहास को स्थापित करने में आपकी मदद करी हो, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और उस दृष्टिकोण से जो विषय है ये अपने आप में बहुत ही सजग है, लेकिन उतना ही मुश्किल है और उतना ही चैलेंजिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूं। इलेक्शन होने के बाद आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो मैं जरूर जानना चाहूँगा कि मैं अपने इस कार्य में अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कितना कामयाब हूँ। मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है, मैं इस राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते आज गर्व महसूस करता हूँ कि भारत के इतिहास में भारत में गुजरे 73 सालों के लेखे जोखे के रूप में वर्तमान सरकार द्वारा एक ऐसा अभियान समूचे देश में चल रहा है जिसे एक झंडे तले मनाया जा रहा है, और उस झंडे का नाम दिया गया है, आपके सामने है झंडे का नाम, आजादी का अमृत महोत्सव। जहां आप आजकल जा रहे हैं, 75 साल आजादी को हो गए, wherever you are going in the entire country, whatever segment of society you are finding, wherever any institution is there, any organization is there, that organization, that institution, that department, that government sector, everyone is involved in celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav. But have you ever thought of what actually under this umbrella term the government of India is intended to really communicate to you what they mean about it? Have you ever thought of? Or is it simply a terminology that every one of you should remember this terminology and make use of it without understanding the essence of what actually the intent is involved there? And it is in this context, before I switch over to the real kind of the content which I am going to speak to you about the kind of topic which Joshi has assigned to me, I would certainly like to share with you my perception about this kind of slogan which has been given by the present government in the context of library information science. This is something which is universal. We have been talking of something about the 5 laws of library information science which are universal. I am not saying that the 5 laws of library science are something related to what Azadi ka Amrit Mahotsav has been given as a slogan by the government of India, but the kind of 5 themes which has been given by the government of India under which the Azadi ka Amrit Mahotsav has been celebrated,
that it need to be taken care of and understood in the sense that where we stand and in what capacity and in what way we will have to correct ourselves from the field of life and information science and make the society and make ourselves realization of what we are and how much indispensable we people are there for the society, for the development of this nation. It is in this context I would like to share with you the 5 things the government of India has given for the celebration of Azadi Ka Mahotsav by every segment of this society. The first thing is freedom struggle. 75 साल में हमने ये झांकने का प्रयास करना है, हमने ये जानने का प्रयास करना है आजादी के जिन स्वर्णिम लम्हों को हम जी रहे हैं, आज जितनी स्वतंत्रता के साथ हम भाषा की व्यक्ति, बोलने की व्यक्ति, विचारों की व्यक्ति, जीवन में जिस स्वतंत्रता के आचरण के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उसका क्या इतिहास है? जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आपको उन लोगों के सैक्रिफाइस के बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि जितनी आजादी के साथ, जितने सपन के साथ आज आप जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को हमें प्रदान करने के लिए कितने कष्टों के दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। आजादी के इतिहास में आप झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि असंख्य लोगों ने इस आजादी के अमृत उत्सव को मनाने की प्रेरणा स्रोत के रूप में जो धरती, जो भूमि हमें प्रदान की है, उसमें कितना लहू, कितना सैक्रिफाइस लोगों का रहा है। और जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप पाएंगे, look at the freedom struggle we would have to also see in the context of library and information science. Since I am here to speak something about the library and information science, I am trying to correlate these 5 things in our context rather than having a dig into the struggle movement being made by our freedom fighters right from 1764, 1757, 1764. These are the 2 events historically proven. One was 1757, the Battle of Plassey, and 1764, the Battle of Buxar. These were the 2 fights which were fought between the Muslim rulers at that time and the Britishers, and Lord Clive happens to be the person who has twisted the entire Muslim administration into the hands of the East India Company. But the 200 years and more than that, the rule of the British, the Muslims in this country, and then after about 200 years of Britishers, this is the saga, this is the legacy, this is the kind of thinking which we need to have to really understand what is the meaning of freedom and in what way we were exploited, in what way the tortures were seen, in what way the lives of thousands and thousands of people have sacrificed for getting the freedom for us, and therefore there is a need to really have the feeling of nationalism, and that is why the government of India, perhaps in my opinion, has opened you the subject of celebrating आजादी का अमृत महोत्सव। जब आपको संघर्ष करके कुछ मिलता है तो उसको भोगने का आनंद ही कुछ अलग आता है। हमारे पुरखों ने ये आजादी का अमृत अवसर हमें दिया है, हम जरूर जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्या रहा होगा। कभी आपने कल्पना करी है कि क्या पुस्तकालय सूचना विज्ञान से जुड़े हुए लोगों या पुस्तकालय में काम करने वाले लोगों या पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालयों ने क्या कोई ऐसी भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर निभाई होगी? यदि निभाई होगी तो क्या स्वरूप रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी? आप देख सकते हैं कि there are 2 people. I do not know how many of you have really understood the name of, we have been talking of Ranganathan. Yes, the father of library science is like a god. But then there are disciples of Ranganathan as well, who have done a lot of things for the development of libraries in this country, and we have been talking of something of the library movement which has taken place in 1910 and 11 from Baroda, when Shivaji Gaikwad III has started the movement of public library in this country and inviting a warden to come over here and start teaching the LIS course through of launching of certain course in library science. But my dear friends, there are people
who have been contributing a lot for the public library movement in this country, and those people are not having the place on the historical fact, thoughts and text being written by the research scholars like me and many of us. But when you really do the real research, you find there are documents in which it is being clearly listed. I have mentioned the name of the document which is telling that the Kerala happens to be the place where the public library movement started, much more rigorous, and the person was none other than the Yankee, Becker, Ramana and Nagbushna. These were the two people who have created the public library system in Kerala. Rest of the world, rest of the country has seen it. You see, have you ever thought of कि देश का वो महान सूत जिसने महान पूत जिसने बहुत छोटी सी अवस्था के अंदर भारत की आजादी के संग्राम को लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, मगर आज भी मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी जो शायद अपने अंतिम सांसों के दौर से गुजर रही है, चांदनी चौक के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर यह हाउस है, आज भी उस लाइब्रेरी की दीवारें शायद अगर बोल सकती हो और सुनने वाले सुन सकते हो तो चिल्ला चिल्लाकर बता रही हैं कि वो रणकुंवर उस पुस्तकालय में आता था, वहां के साहित्य को पढ़ता था और साहित्य के पढ़ने के साथ साथ अपने लोगों के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की गति को प्रगति प्रदान करने के दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करता था। Yes, evidence is there. We have not thought of that the kind of library movement and the kind of freedom movement in this country has taken place. We people, the library professionals, the libraries have played a very pivotal role in that, and that need to be brought to the notice of the society, because we are still, and even till date, we are struggling for the kind of image the library professionals will have to have in this country as compared to the people who are enjoying the kind of power, who are enjoying the kind of image and privileges in other disciplines like engineering, technology and management, in medical science as well. We are struggling for it, and our contribution is not lesser than the people who are working in any segment of the society. This is what we need to realize, this is what we have to prove, and that has to be proven only when you will have to look into your past and find it out what actually you were and what you have done. See, the press has played a very pivotal role in the freedom movement. But have you ever seen that what press does, what is the place where that treatise, that newspapers which were published are acquired by, and what was the place where those newspapers were read by, and who were the people who were reading those newspapers, and what kind of feeling those newspapers were trying to spread. None of us had thought of it. It was not something like a news which you are reading today, that Russia has attacked on Ukraine, or some kind of movement is taking place on the basis of caste, or some kind of other kind of religious politics is taking place in this country. The role of newspapers of present day's time is not of that kind which the role of newspapers has played at that time, because they were the newspapers brought out by none other than the nationalistic people. The people who were fighting for getting the freedom from the hands of the British. The different kind of journalists, and you see the press has been playing that kind of a role that the British government, denying the fact that they are here and they have claimed at international fraternity, that they are here to civilize the people of India, they have crushed the feelings of all the masses at that time, and their motive was to exploit the resources of our country, and that is why in the international text, even the historians who are the historians of Cambridge School of History, they have written the term, and they have used the term colonial economic, colonial Archie Upniveshwa. That is the term which has been given by the people to explain the entire
period of Britishers who have ruled in this country. These are certain kind of newspapers. There are thousands of papers. It's not possible for me or anybody else to list out all of them and bring to your notice. But if you really do this research, you will find only thing that you should be thinking on it, in digging and putting yourself into the ocean of that information resource which is available will tell you what was all. But these are important newspapers, and these newspapers in different kind of languages around the country were trying to spread the national movement in India. Then, next. See, are you listening? Are you reading the name? Person like Dada Namoji, who didn't know the brain drain theory which we are talking, we are seeing nowadays. There was a lecture on Azadi Amrit Mahotsav, the foundation day of the 100-year celebration of the University of Delhi, and our Vice President of India, when Naidu was there. And what he said, he said today was something which was spoken by Narodi long time back. And he was very much that I don't mind that our people should go abroad for their study, for their getting higher education, for getting the expertise and all. But at least they should come back, because this country has given them birth. They should have the responsibility of doing something for this country. This kind of theory of brain drain was given Dada by Naroji, and it was not the theory of brain drain. Even through these newspapers, the consciousness, the awareness of the freedom movement in this country was given by the people like Dadabhai Naroji, Bal Gangadhar Tilak, who didn't know Bal Swarajya is my birthright. Freedom is my birthright, और मैं इसे लेकर रहूं. ये शब्द नहीं है, ये वो आगाज है, ये वो अग्नि है, ये वो प्रसार था एक माइंडसेट का जो सारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी जगहों से निकलकर, गांव से निकलकर कस्बों में आया, कस्बों से निकलकर शहरों में आया, और भारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति को इतना प्रज्वलित होते हुए देखा कि हमें 1947 में अंततः आजादी का स्वाद चखने को मिला. सी गोखले, फिरोजशाह मेहता, महात्मा गांधी, and many more. Don't think that I am not taking the name of Subhash Chandra Bose or Guru or Sahadev or Rajguru or Azad, Chandrasekhar Azad, because what is happening is, in the present time, the young people like you, we people are believing on the kind of things which have been spoken to us without looking into the effort being made by those leaders for getting the freedom. I do not know. There may be some problems with many historians who have written it what, and there may be some kind of path which has been wrongly adopted by the father of this nation, Mahatma Gandhi. But then the contribution of Mahatma Gandhi for getting the freedom of this country cannot be ruled out. He was the only man who has created the national movement as a mass movement in this country. I differ that he was having the philosophy of ahimsa. People do say, but I feel in the present circumstances there is a need of doing the research of the philosophical outlet of Mahatma Gandhi thinking, whether he was the man having the philosophy of ahimsa. If I speak on a public forum like this, maybe I will be no more, because there are fanatics who may not be accepting this fact. But I have a reason to speak all these things. Look at 1947, Quit India movement, Bharat Chodo Andolan, and then there was slogan which was given, do and die. What is the meaning of do and die? If you look and interpret the meaning of do and die, it was a stage where Gandhi was feeling himself also helpless, because there was a world war second, and there was a feeling that the Japan and German and Bangladesh would have been winning, and again he was having the threat that instead of the 200 years effort being done for getting the freedom movement from the Britishers, then we will be slave of Japan and Germany and Italy, and again we will have to start to fight for getting the freedom. And since our soldiers were fighting at international level in the favor of Britishers, so these countries should not have this kind of understanding that we were supporting the Britishers. So there was a kind of a movement which was launched, and the slogan was given that do and die. This is the right time, ya to karo ya maro, but get the freedom. This needs to be historically looked into, and if you do the research, you will find, I am sure, that you will find that the Gandhi was trying to build up the platform and making the people
eligible, ready for fighting with the people who were much more powerful with weapons and other kind of ammunition, and we were having only hands to fight with, isn't it? So we have to develop ourselves that strong that the kind of exploitation and the kind of torture which they were giving to us, that would have not been able to block us, and that was the situation that the hand would have been much more enough to just throw away the British rule from this country. Many more, Chandrasekhar, Amrit Mahotsav, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dadabhai Navroji, all are the people, and not these thousands and thousands people, we do not know the names of them. This Azadi has not come to us by a group of people whose names are known. The Azadi must have been by these efforts of thousands of those people who are not the part of history, of the text of Indian history, but they have sacrificed their life and their family for getting the freedom. That is why there is a need to celebrate the Azadi Ka Mahotsav, realizing what and in what way we are able to achieve this goal, this time, this situation that we are happily celebrating in the entire country, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Next, see, whatever freedom movement was taking place, the Britishers have started their level best to crush it. These are certain kind of acts which was passed by the British government. Censor Press Act 1799, Licensing Revolution 1843, Press Act 1835, Licensing Act 1857, 1867 Vernacular Press Act 1878, Newspaper Implement to Offences Act, and 1908 Indian Press Act 1910. Now see, what was the necessity of bringing these kind of acts by the British in this country? Because 1757 प्लासी का युद्ध को झांक कर देखो, 1764 के बक्सर के युद्ध को देखो, और उसके बाद भारत की आज़ादी का जो संघर्ष 1910 तक आपने देखा, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, उस सारी जर्नी को देखें तो आप पाएंगे कि प्रेस की बहुत जबरदस्त भूमिका रही, जर्नलिस्ट की बहुत जबरदस्त भूमिका रही, लाइब्रेरीज की बहुत जबरदस्त भूमिका रही, जो लोगों को प्लेस प्रोवाइड करा करती थी, लिटरेचर प्रोवाइड करा करती थी, नेशनलिस्टिक फीलिंग को डेवलप करने का इतिहास झांक कर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेगमेंट की कितनी बड़ी भूमिका रही। और वो क्यों? दिस मे बी वन ऑफ द रीजन दैट द सेवरल नेशनलिस्टिक ऑथर adopted the pseudo name for writing the nationalist text. 124 section 124A of Indian Penal Code, and what it was saying, if anybody was found involved in getting the freedom movement, participating in freedom movement, there will be what they say, the transported of for life of imprisonment for any time. देशद्रोह की कैटेगरी में शामिल किया जाता था of those people who were fighting for freedom movement, and that may be one of the reasons that the nationalistic authors started adopting the pseudo name for writing their text. आप लोग पढ़ते हैं प्रेमचंद को, आपको कैटलॉग पढ़ाने वाला टीचर आपको पढ़ाकर चला जाता होगा कि हाँ जी pseudo name क्या होता है, और उसके बाद एक और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है प्रेमचंद का, आपके नाम रख दे, क्योंकि आपके टीचर्स ने जो पढ़ा रहे उनके टीचर्स ने प्रेमचंद की गाथा को महिमा मंडल किया और हम भी कर रहे हैं pseudo name। लेकिन प्रेमचंद अकेले ऐसे राइटर नहीं थे, बट प्रेमचंद अग्रणी राइटर्स में से एक थे। लुक एट what Premchand has written. I would like to just name one text. There are hundreds of texts which Premchand has written, but one text is Godan, and might have you read, or if you have not read, see the movie. The movie was made on this Mother India, and you see the character Hori, the man who was exploited, and the exploitation of Jamidari Pratha was predicted and shown in that movie. But actually, do you think that the intention of Premchand was to depict and show you the exploitation done by Jamidars? No, it is not like that. The exploitation was done by Britishers to this country. Through this text, perhaps the Premchand wanted to tell what is the essence and what is the pain, what is the sorrow of the kind of economic exploitation, physical exploitation which was taking place during that region. And he knew, had he written something by adopting the
real name Dhanpat Rai or Nawab Rai, he would have been penalized under section 124A, and perhaps if that would have been there, if they would have identified who is this Premchand, he would have been caught, and the text which you have read, which you have today to read of Premchand, would have not seen the day of light. There are many such people who have done, many such newspapers and the writers of that done, because of these kind of act they would try to trust him. तो पहला जो थीम है क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसमें आपने देखना है, हर सेगमेंट में देखना है सोसाइटी के कि 75 साल में उस सेगमेंट ने क्या किया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। देन वी कैन कम अप अंडर दिस थीम, क्या लाइब्रेरी का क्या रोल रहा? लाइब्रेरी रोल building up of increasingly strong national sentiment and consciousness among the Indian people about the freedom movement of India and the freedom struggle of people of India. This is one tag which can be given for the whole journey of the movement of this country, right from 1757 to till 1947. Then, in the development and consolidation of growing nationalism movement, भारत में बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, ये काम आजादी से पहले भारत के नेशनल लीडर्स ने किया, भारत के मानस ने किया, भारत की जनता ने किया, भारत के उन रणतंबूरों ने किया जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इन दी क्रिएशन ऑफ नेशनल एंड प्रोफेशनल लिटरेचर एंड कल्चर, राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गई, चाहे प्रेमचंद ने करी या प्रेमचंद जैसे हजारों लेखकों ने करी, और भारत में जन जन के अंदर इस बात को पहुंचाया कि हम गुलाम हैं और गुलामी की जंजीरों से हमें बाहर निकलना होगा और उसके लिए हमें राष्ट्रवादी होना होगा, और ये बताया कि किस प्रकार से राष्ट्र का सुख कितना बड़ा है और हमें किस प्रकार से अंग्रेजों के हाथ से निकलकर मुक्त होना है और भारत को आज़ाद कराना है। और उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया। आपको याद होगा एक जर्नलिस्ट हुए हैं कार्ल लुइस, एंड ही हैज रिटन, जब दांडी यात्रा हुई और नमक के लिए जब नमक समुद्र पर कानून तोड़ा गया दांडी यात्रा के माध्यम से, तो लुई फिशर किंग दैट जर्नलिस्ट हैज रिटन कि ऐसा लगा जैसे विश्व के अंदर क्रांति हो गई है। इतना जनमानस उभरा कि ब्रिटिश एम्पायर की चूल्हे हिल गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लुई फिशर किंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर अपने टेक्स्ट में बात लिखता है। तो इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन कैसे जागृत हुआ? वो खाली लाठी लेकर लगोटी बांधकर जगह जगह घूमने से नहीं हुआ। लोगों के अंदर हर सेगमेंट में साहित्य के माध्यम से, जो रचना लिखी गई उनके माध्यम से, जो न्यूज़पेपर छपे उनके माध्यम से, जन जन कण कण के अंदर ये भावना प्रेरित करी और इस बात का एहसास कराया कि हमें भारत को अब आज़ाद होना ही। और इन दी foregoing of bounds of fertility with the progressive people and class in outer worlds, अपने तक सीमित नहीं रहे। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया कि हम ग्रेट हैं, अवर कल्चर इज हाईली ग्रेट, डोंट से दैट यू आर हियर फॉर गिविंग अप द सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरी आवाज इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वी आर ऑलरेडी कल्चर्ड। There is evidence historically proven that the people from outside the world were coming in this country for getting the education and getting them learned. Nalanda and Takshila, Chanderi and Malwa, the Mithila and the Sonpuri in south, these all were the learning seats where the people were coming from outside and they were getting the education. Then what had been done in the past 400 years, that entire legacy and culture was gone, and then we were told that we are uncultured people. And that is why the Machiavellian education system was created in this country in 1830. Because they wanted to run the British administration, they wanted to produce the clerk. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, historian says, historical text says. Next, the second is ideas. आजादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेकंड थीम क्या है? सेकंड थीम है ideas. Under this ideas, what you have to do? As a library professionals, I am not talking of something which has been explained by the government site on it. I am just trying to tell what is our honor, what is our responsibility to look into these kind of mantras, these kind of things. What it says, since the days of Nalanda, Takshila, Mithila, Sonpuri, Jagda,
till date the library movement in India has witnessed complete transformation of librarianship. Don't you feel like this? Now you are sitting in the air-conditioned room. You are talking. You are accessing the information resource by using this machine, and you can access the information 24/7. Who has created this kind of plethora for you people? It is the entire journey of 75 years of development, irrespective of whom it was the government. I am not here, I am not a politician, I am not here to criticize one government or the other. But what I am saying is, 1947 to till date, whatever development this country has seen, this country has not only transformed almost every sector of this country. Our libraries are not the exception to it. And we have seen the complete transformation of library and information centers from traditional to digital world. Then, lots of new ideas, new areas of librarianship emerged. Application of ICT opened the path and paved the way for the information and traditional librarianship to the digital world. Now you are talking of something about the access of information. Days have gone when you wanted to say that I am the owner of this property. This is my book. Days have gone. Now the book is universal. Your book is accessible on your internet. You are getting permissions from the people and converting those kind of valuable text as a world human resource. Lakhs of books and periodicals are available in public domain, accessible free of cost. And you can access 24/7. This is a kind of transformation which the country and the world has seen. We are not exception to it. Then, many methods of techniques and tools were developed to shape the modern libraries, making them more accessible and usable. Days have gone when you were making the catalog cards manually. Days have gone that you were using the column classification and classified catalog code or AC. And not only that, you have tried to talk of something in the context of syntax and context. My dear friend, there was a time when the days have gone when you were searching some information on internet, you would have got garbage of it. There was a lot of difficulty in finding what is the record and what is the precision value of the information which you are searching. But now you have search strategy mechanism. Now you have advanced search mechanism. Now you have Google Scholar which is helping you to make search and confine it. It is only possible when the people in the field of linguistics have been used and they have started classifying the text in the context of syntax and context. And that is why the days were, I still remember when I was a student like you, and there was a professor who said that if you access the information on internet of a term, and the term was, I still remember the term was, I will name that professor also, she is no more now. He told me, okay, you search sometime on internet, ध्यान से सुनिएगा जोशी जी, what aids to Pakistan. And when you started searching aids to Pakistan under that term, you find thousands of hits were there which were containing not only the aids to Pakistan in the context of finances, in the context of technical expertise also, and more and above, at that time there was a big havoc and big threat of life of AIDS like disease, and that was also having the references of it. There was no context of at all. That would have been solved nowadays simply because of the application of context and syntax. My dear friend, do read what context and what syntax is there. Only then you will be able to really understand what kind of transformation of library information science and seeing today. Next. The third is resolve. टाइम लिमिटेशन तो नहीं है ना भाई, जल्दी तो नहीं है ना जाने की, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। अगर मजा आए तो बैठना, वरना कह देना वही खत्म कर देंगे। कोई मतलब ये प्रसाद वो नहीं है कि ये इट्स नॉट, आई एम नॉट ए डाकिया जिससे घर हर एक करके घर चिट्ठी जाएगी। आज मेरे मित्रों ने, मेरे छोटे भाइयों ने मुझे बुलाया है तो मैं भी गदगद हूँ और भावनाओं से ओतप्रोत होकर आज आपके सामने खड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे मैं भी गंगा जी नहा जाऊँ, बेचारा हूँ। इसीलिए शायद आज ऐसी स्थिति में हूँ आपके सामने। See, resolve. Now what it says?
What kind of resolution you have in your life? After all, you are a library professional. What do you want? What kind of library and librarianship you want to give to the country? Do you want a kind of a library which is not able to really remove the thrust of information of your users? If not, then what kind of resolutions you have in your life? What you will be doing that your library and librarianship becomes the discipline indispensable for the society, and the library and librarianship will play indispensable role for the growth and development of nation, national development. We do talk of that the policy structure, the decision makers should make use of library professionals and library people, considering that this is the segment, these are the people who can really help us to move ahead further for the development of this nation as well. See, so what can you resolve? Library professionals need to design and develop task-oriented, mission-oriented programs and systems to make library and information centers as indispensable for this practical growth and development of a civilized society and national level. You are already doing. A lot of efforts have been done. You are already doing, but there is a need to do more in that direction. Efforts to be made in changing the mindset of people about profession of libraries and library professionals whose images still need to be improved and the value and essence of libraries and library professionals established in the society so that they are also respected by the people in the same way the engineers, doctors, managers, decision makers. क्या ये सच नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल आज 20वीं शताब्दी के इस मुकाम पर आकर भी क्या इमेज है? लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं? आज भी आप रिमोट प्लेसेस में चले जाइए, विलेज में चले जाइए और किसी बुजुर्ग आदमी को आप बताएं, लड़कियां, मैं कभी प्रश्न करता था, संजीव चला गया यहाँ से उठकर, शायद दिनेश ने उस टाइम वो लेक्चर सुना हो, कब की बात है? 10 साल पहले की बात है। और 10 साल पहले की बात में मैंने उस भाषण के अंदर 10 साल पहले का रेफरेंस दिया था, जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं आईटी कॉन्फ्रेंस के अंदर पटियाला में था और वहां पर एक बच्चे ने एक प्रश्न सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल जहाँ पे भीषण पितामह बैठे हुए थे उनके सामने ये प्रश्न कर दिया था कि मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ मिस्टर डायरेक्टर वाज बना वी नो मोर नाउ मिस्टर डायरेक्टर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल सिटिंग इन द हॉल, एंड दैट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, जोशी. द क्वेश्चन वाज, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू सी योर सन एंड डॉटर बिकमिंग लाइब्रेरियन? My dear friends, there was a pin drop of silence as if Dushashan is doing the children of Draupadi, and all Bhishma Pitamahas had no other way just to put their neck down, and they were just realizing what kind of aparat this gentleman has done. We are known as Bhishma Pitamaha professional, we are enjoying our entire life, but we are not able to really raise our hand and say, yes, I am the man who would like to see my son and daughter becoming. Have you solved it? In the entire nation, you will not find even 1% of people whose son and daughter have become librarian of the library profession. Why it is so? Why it is so? There may be some reasons of it. आज भी आप बात कर, मैंने एक बच्ची से पूछा अपनी क्लास के अंदर, मेरी बच्चियां बैठी हैं, आज ये प्रश्न मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ. मैंने वो कहा कि बेटे, मान लीजिए कि आपको मैरिज करनी है और आपके पास 2 विकल्प हैं. एक असिस्टेंट प्रोफेसर, उस टाइम लेक्चरर डाला जाता था, और कॉलेज लाइब्रेरी. दोनों का पे स्केल समान है, सारी फैकल्टी समान है. एक असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले में उसके पास कमरा है, उसके कमरे में एसी लगा हुआ है. एक मेरे जैसा मामूली मास्टर प्रोफेसर होने के बावजूद भी एक गिलास का पानी अपने आए हुए मित्र को खुद जाकर भरकर लाकर पिलाता है, और एक लाइब्रेरियन बेल बजाता है और उसका चपरासी आकर पानी, चाय, बिस्किट सब सर्व करता है. फिर भी आप किससे शादी करना पसंद करेंगे? तो फटाक से एक one young girl got up and said, sir, still I would like to marry your assistant professor. I said, why? You have done really well. You know what librarianship is. She says, it's okay, sir, but my problem is that I am a social man. After marriage, I will have to move in the society, and whenever I will move in society and I get introduced my husband, who is he, and if I say that my husband is librarian, that fellow will not recognize. He will think that she has been married to a boy whose job is only to issue and return the book. That's it. There is no image at all. But the moment I say my husband is assistant professor, that fellow will look like this. This mindset of people need to be resolved today itself.
Every one of you has been honest to do this. Resolve this and find it out that the kind of image which has been thrust in the society by the people who have been against the library profession, they will not be allowed anymore to do that. And we are here to resolve in Azadi ka Amrit Mahotsav that look, the days have gone that you were able to exploit us. अब नहीं करेंगे, हम indispensable थे हैं और रहेंगे. Therefore, you need to come forward and adopt all the new things which are happening. Adopt marketing strategies, adopt management consultancy, adopt all kind of ICT tools and convert and be a man to sell your product and services yourself as ISICpedia in the USA has done. Current content, only 3 volumes they used to publish and crores of dollars that fellow earned, and what he was doing only preparing the aspect of it. Now the days are when you have the full text databases. Why only Scopus? Why only Web of Science? Why not some other Scopus and other Web of Science can be created? Why can't you people prepare a small type of LIS product and services and market them? And why not you change the mindset of the society that the people are ready to spend money for the information which they are getting? हम और आप कैफे में बैठकर 100 रुपये का डोसा खा सकते हैं, हम और आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं 200 रुपये का मंगाकर, हम एक पिक्चर को देख रहे हैं 500 रुपये खर्च कर सकते हैं. अगर लाइब्रेरी में बैठा हुआ एक व्यक्ति आपको 2 रुपये अगर फोटोकॉपी के लिए मांग ले तो आप उसे ऐसे भूलते हैं इसने मर्डर कर दिया. ये माइंड सेट चेंज करने के लिए हम पब्लिक स्कूल सिस्टम के अंदर हजारों रुपए देकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं. वही बच्चा जब यूनिवर्सिटी सिस्टम में आता है और यूनिवर्सिटी उसे कहे कि आपकी फीस हमने 50 रुपये बढ़ाकर 100 रुपये कर दी है तो बसें फूक दी जाती है, बिल्डिंगों में आग लगा दी जाती है. इस माइंड सेट को चेंज करना है. ये माइंड सेट अगर चेंज होगा तभी आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक्चुअल स्वाद आप चखेंगे, अन्यथा तो शब्दों के अंदर गुम होकर रह जाएगा. टू डिजाइन एंड डेवलप कस्टमाइज्ड एलाइंस प्रोटेक्शन सर्विसेज. आज मैं आप सबसे बात करूं कि व्हाट आर द एलाइंस प्रोटेक्शन सर्विसेज, व्हाट आर द लाइब्रेरी सर्विसेज. 99% of you people would start saying CAS, SBI, and reference. How many times and up to what? We are going to make use of these kind of traditional segments of library services which were known in the days when we were in the initial phase of developing the libraries. क्या ये सच नहीं है? आज भी आप किशन कुमार, आज भी आप सेवा सिंह, आज भी आप पुराने उन ऑथर्स की किताबों को पढ़कर लाइब्रेरीशिप पास करके निकल रहे हैं जो मीनिंगलेस हो चुके हैं. Day before yesterday, I was telling one of my young colleagues, who is a very intelligent boy, but there was a problem. I just asked, you are teaching cataloging practice. Can you tell me where there is a violation of Canada Facility? At which place? And why the violation has been admitted when the kind of tenants performed by Ranganathan, he had not permitted to do that. But only in case of Canada Facility, Ranganathan has made the provision for the violation of Canada Facility. That's the rule. I am sorry, I am so excited people. मेरा विद्यार्थी भी रहा, मैंने कहा सारे जमीन में बांट दूंगा तेरे को, और कम से कम 10 स्टूडेंट हो बैठे. मेरे बाद में लाइव किया, मैंने क्या कह दिया आप समझ रहे हैं? सी, जब आप अपने देश से प्यार करते हैं, जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं और जब आपको खत्म करते हुए देखते हैं तो आपको दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो चीख निकलती है. ऐसी चीख मुझे निकली कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है और आज ये इतनी छोटी बात कर रहा है शिक्षक होने के बावजूद भी, तो ये वास्तव में पिटने का अधिकारी है, पिटना चाहिए. अगर मेरी औलाद तो बहुत मारता. सो वी हैव टू रिजॉल्व हियर, वाकई वी हैव टू रिजॉल्व हियर कि यार जो भी करें रिमार्केबल करें, हम जो भी करें ऐसा करें कि सोसाइटी को, देश को फायदा हो. हमें लाइब्रेरीशिप को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाना है. हमने खाली टेक्नोलॉजी के रूप में डिजिटल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हमें यही गुणगान नहीं करने हैं. हमें स्कोपस ऑफ वेब ऑफ साइंस के बारे में सब कुछ नहीं बताना है. क्या हम कुछ अपना भी नया कर सकते हैं? क्या हम अपने प्रोडक्शन सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स को क्या हम सेल्फ मेड बना सकते हैं? क्या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लायक बना सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? रिजॉल्व करें, आज ही सोचें इस बारे में. यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो सोसाइटी और देश का बहुत भला होगा. Efforts need to be made to establish library profession as a notable profession and create environment in society for the work accessibility of library and library profession. My dear friend, 99% library professionals after getting their job
As a librarian of a college, do not try to find it out what is the information needs of their readers. Is it not a fact? Is it not a fact? It is a fact. The moment you get the job, you forget that what for purpose you have been appointed in this library. You do not know what your readers want. You do not know what is there. If had been there to do that, then the 80% of unutilization of information resources on which crores and crores of rupees have been spent would have not seen the day of waiting. Somebody will come to me. What would be the state of soul of Ranganathan? What he would have been thinking of? Libraries are used. Libraries are for use. Every reader is book, every book is reader. होती होगी यार, सोचता होगा मैंने क्या लॉ बना दिए यार, पिछले 5 साल से 10 साल से मैं खरीद के शेल्फ पर रखी गई हूँ, मेरे पास कोई आती नहीं। अगर वो यूजलेस थी तो क्यों खरीदी गई, और अगर वो यूजलेस नहीं है तो रीडर क्यों नहीं आया वहां तक? क्या इस पूरे प्रक्रिया में लाइब्रेरी प्रोफेशनल का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? आपके 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए डिपार्टमेंट का फैकल्टी मेंबर उसको नहीं मालूम है कि आपने लाइब्रेरी क्या खरीदी है? क्या ये आपका उत्तरदायित्व नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन नीड्स के लिए जो आपके पास है आप उसकी इंफॉर्मेशन तक उसकी जानकारी तक उसको लेकर दें? और आजकल तो बहुत आसान है, आज हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर है, हर डिपार्टमेंट में नेटवर्क है। सिर्फ क्या करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन उसके ईमेल पर डालना है। तो ईमेल कलेक्ट कर कर सिर्फ एक मेल डालनी है कि सर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ है, लेकिन हम इतना भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम तो लाइब्रेरी में बैठकर बीड़ी पीना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, 2 घंटे लेट आना चाहते हैं, 2 घंटे पहले जाना चाहते हैं, लंच को 2 घंटे के पहले करना चाहते हैं, है ना? अगर महिलाएं हैं तो गॉसिपिंग करना चाहती हैं, सर्दी का मौसम है तो स्वेटर सुनना चाहती हैं। अभी चाहता हूँ आपको बुरा लगा खूब गालियाँ सुना, आई डोंट माइंड, लेकिन हमें इस माइंडसेट से निकलना है। अगर हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल सकते तो ये लाइब्रेरी खत्म होने जा रही है, आप समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा बड़ा मकान गिरते हुए समय जरूर लगता है, लेकिन गिरने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, इस बात को आप समझ लीजिए। और यही कारण है कि जिस वैकेंसी से जो आदमी रिटायर हो जाता है वो फिलअप नहीं होती। पिछले 25 साल से 3 जगह की मैंने नौकरियां छोड़ी, IIT दिल्ली के अंदर छोड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में छोड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में छोड़ी, भरी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया वी कैन नॉट अफोर्ड द पीपल हु डू नॉट फील देयर वर्क एज वर्क। Work and worship has to be thought of. Only then we will do. चल भैया आपका काम करें। The third is actions. What actions need to be? मैं आज़ादी के महोत्सव के 5 अमृत जो तत्व हैं, जो थीम्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी कर्टन रेजर पे तो आया ही नहीं हूँ, वो इसके बाद आऊँगा। तो क्या है एक्शंस? What actions you need to take? Explore new program activities which are taken library in India to the new heights. Think of what you can do much. ICT तो आपने बहुत कर ली, लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज भी कर लिया, कंप्यूटराइजेशन के फ्रूट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। How many of you people have created the digital repositories? Only 2%, maximum even 3%. And what is the plea is given? We need to get the copyright. I simply do not know. आज तक ये बात कोई क्यों नहीं उठा सका किसी संसद में, किसी विधानसभा में, अंतर्राष्ट्रीय किसी कोर्ट के अंदर, कि यदि मैं आपका माल बेचता हूं, अगर आप प्रोडक्ट मेकर हैं और मैं आपका माल बेचता हूं तो मुझे कमीशन मिलता है, मेरा घर बार मेरे बच्चे पलते हैं उससे। लाइब्रेरी तो किसी का माल बेच रही है, लाइब्रेरी में आने वाला हर माल हर पब्लिशर का हम यूजर तक पहुंचा रहे हैं, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, तभी उसका घर बार चल रहा है, तभी उसका बिजनेस चल रहा है, तभी वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जिंदगी की मौज ले रहा है। और उसी लाइब्रेरी प्रोफेशनल को ये कहा जा रहा है कि वी विल कैच होल्ड ऑफ यू एंड टेक यू बिहाइंड द बार इफ यू विल नॉट स्टॉप द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट लॉज। आई हैड रेज्ड द इशू व्हेन देयर वाज वन स्पीकर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर वाज अ लॉयर एंड ही वाज गिविंग द लेक्चर एंड आई सेड कि Mr. Lawyer, you are talking something about the infringement of copyright laws, but look, I give you one example. I am the professor of University of Delhi, and there is a Maurice Nagar, and there is a Maurice police station, and in front of it there are shops of photocopy. आपने देखा ही होगा. How many cases has been registered? Not even single case. You know why it has so? Why it is? Because those publishers of foreign publishers, they are as clever as our unpad gawar kisan who put a हांडी अजीब सा चित्र बनाकर जमूरा और खेत के अंदर टांग दिया
ताकि पक्षी ये समझे कि भाई यहाँ तो इंसान खड़ा हुआ है, उसकी फसलों को बर्बाद ना करें। दैट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड दैट पब्लिशर हैज गॉट इट, दे हैव स्प्रेड इट, दे हैव publicized it, that we will catch hold of you and put you behind the bar because there is a law of infringement of copyright laws and intellectual property rights. But there is no case registered. Why? Because there is a law. For my dear friends, for you people, there is a law. The place of registering the case is the place of jurisdiction where the crime happens. जिस जगह क्राइम होता है उसी जगह केस रजिस्टर किया जा सकता है। मॉरिस नगर पर होने वाली किताबों तो कॉपीराइट लॉ में अगर केस रजिस्टर्ड होगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर का, एल्जेवियर का, तो अमेरिका से, इंग्लैंड से फ्लाइट पकड़कर जिसको भेजेगा वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे का खर्चा होगा। जहाँ पे लॉयर को पैसे देगा वो कहीं ज़्यादा खर्चा होगा जितना मैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए अगर किताब को जेरॉक्स करा रहे हैं। Because 99% people who are getting Xerox from those places, they are just getting Xerox because of their reading. They are not selling in the market because there is no market at all to buy those kind of stray papers. आज पेपर हो गया, कल आपके लिए भी यूजेबल नहीं है। आज आपने फोटोकॉपी कराया, एक आर्टिकल पढ़ा, कल को पेपर दिया, परसों आपने इसको थ्रो कर दिया। ऐसे मटेरियल के लिए कॉपीराइट और इंफ्रिंजमेंट राइट या IPR राइट कौन लड़ने आएगा? जमूरे की तरह टांग रखा है, आपकी हमारी मानसिकता को धुतकार रखा है और हमें ये एहसास करा रखा है नहीं, हम डिपोजिटरीज क्रिएट नहीं करते थे, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। काय को हम ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते कि लाइब्रेरीज पर और लाइब्रेरी रीडर पर और यूजर के ऊपर ये लॉस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये जब भी एप्लीकेबल होगा, हमने एक फेयर यूज की टर्मिनोलॉजी लगा रखी है, फेयर यूज। वी आर डिफाइनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन वीन्स एंड विजडम। व्हाई डोंट वी डिफाइन this terminology in our वीन्स एंड विजडम? This is what actually we do. Understand? Then development of digital library, electronic libraries, we are trying, but our country is behind to achieve this goal. Milestone. Only the urbanized states you can have few libraries to advertise their information resources, but we are not able to. You know what is the reason of it? You know what is the reason of it? One of the simple reason is, till date the government of India, the University Grant Commission and any policy maker has in principle has not decided to adopt one single software which railway, the airport and other bodies have adopted. आज आप केरला में बैठे हो, आपने टिकट बुक करानी है ट्रेन की, सेम सॉफ्टवेयर। आज आप कहीं भी इसमें कहीं बैठे हो, आपने एयर की टिकट बुक करानी है, सेम सॉफ्टवेयर। लेकिन लाइब्रेरी में कहीं हम कहीं हम रूटाउन लेंगे, कहीं हम ग्रंथालय लेंगे, कहीं हम लिपस्टिक लेंगे, है ना, कहीं हम लिपस्टिक लेंगे। क्यों? कहीं हम वो लेंगे, अरे कौन सा चले तो बड़ा एलेक्स सर, कोहा भी एक है और एलिस सर, एलिस फॉर विंडोज कहीं हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के फीचर्स के बेसिस पर फेस देखते हैं और सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। नतीजा क्या है कि हम डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर ही नहीं पाते। क्यों? हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगर टूल बनाया, उसमें खामियां नहीं होगी, मैं ये नहीं कहा खामियां नहीं है, उन खामियों को कस्टमाइज किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, क्या हम एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कोई भी चेयरमैन पिछले 15, 20, 25 साल के अंदर जितने भी महानुभाव आए, कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि हम ग्रांट नहीं देंगे आपको परचेज करने के लिए, ग्रांट तो हम ही दे रहे हैं ना, तो सोल को यूज क्यों नहीं करते? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करने को तैयार हैं, हमें रिपोर्ट क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, हम सोल तो बनाएंगे, साथ में पैसा देंगे। लो बेटा, मिस्टर एक्स यू बाई ऑन योर ओन, मिस्टर एक्स विल हैव इंटरेस्ट कि यस आई विल बाई, लेट मी हैव न्यू सूट, है ना, न्यू पैंट, न्यू शर्ट, न्यू टाई to have it because I have placed the order like this. It is not a fact. If I say this, people will break my head. आज शायद यहाँ नहीं फोड़ेंगे क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी नहीं बैठे हुए, मुड़ भी बैठे हैं, बाद में फोड़ देना जब बन जाओ। एक हकीकत तो यही है। Then on regular intervals, the workshop, seminars, conferences, meetings, etc., which are really meaningful and relevant for the development of librarianship in India, to be initiated and communicate to the authorities which matter in the policy making of the country. हम अपने अथॉरिटीज को बताने का प्रयास ही नहीं करते क्योंकि हमारे में वो जिगर ही नहीं है। हम डरते हैं ये बताते हुए कि माय लॉर्ड मिस्टर वाइस चांसलर, वी आवर लाइब्रेरी नीड दिस,
our readers want this. We do not prepare the data. We have forgotten what concepts of Ranganathan given for the surveys and statistics in library administration. Look at and read the book of library administration Ranganathan. It's a Bible, and it tells you what kind of statistics you have to maintain. That statistic if you have, and with that statistic you go to Vice Chancellor, no Vice Chancellor this word will be able to say no, we will not give you the funds. You are justifying it. हम क्या करना चाहते हैं? हम एक पेज का अंग्रेजी की खूबसूरती से बना हुआ नोट लिखना चाहते हैं. We want 10 lakh rupees. हम बड़े सुंदर सुंदर शब्द इन ऑनर ऑफ वाइस चांसलर लिखते हैं और साथ में हम कहते हैं you need 10 lakh rupees because we want to buy books or back volumes or whatever. We do not want to put what is the status of acceleration cost of rupee. What is the impact of devaluation of rupee? अभी परसों 3 दिन पहले अखबार के अंदर न्यूज पड़ी कि रुपया डॉलर के कंपैरिजन में इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा नीचे आ गया. Don't you think that will be impact on libraries and buying capacity of libraries as well? On the other side, you are saying that the information doubling rate is increasing very fast. So you are depriving the readers to access to those kind of inventions and discoveries and new literature being generated because you provide that money to buy and occupy and store them. You may talk of a lot of things about library cooperation, library interlibrary loan, network, and so on. But the basic intent is that you should keep on getting up the higher authorities to make them realize, look, if our libraries are deprived of buying the collection which is having preferred content of really being created recently, not brought to the notice of the researcher, the research will die. Then what will be the fate of the development of this country by research? Is there anybody who has this courage to speak of? If you have this courage, you will always be benefited for it. But if you have what? Fear in your mind, Mr. Vice Chancellor, if you have this kind of attitude before talking to the Vice Chancellor, that Vice Chancellor tell his PA that can be added to timing them. Unbelievable. You are useless person. Then this is achievements. Now in achievements, this is what actually the lecture is. हमने क्या अचीव किया ये तो जब ही पता लगेगा जब इतिहास के घर में झांक कर देखो तभी पता लगेगा. इसलिए जो 5वां थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें आपने देखना है 13 डेज ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट. ये तो फिर यही बताएगा कि आपके बुजुर्ग कैसे थे, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार की लाइब्रेरी थी, उनका उद्भव और विकास कैसे हुआ. आइए प्रकाश डाल लेते हैं एक उस सेगमेंट पर. प्लीज I am going to speak to you in this segment of my lecture, dividing them into three aspects: academic, public, and special. Before that, I would like to bring to your kind notice, perhaps cannot be your notice, the two people who have spoken about the negligence of writing history and historicity of library and library management. One is Donald G. Davis. What he says? He says, although a core literature on Indian library history exists, imbalanced, the scholars are very depressed in their interest and their geographical location, with one person really contributing more than one work. There is a little pattern to exist in research. किसी ने बेचारे ने हिम्मत करके कुछ लिखा तो एक आध पेपर लिखा और निरुत्साहित हो गया क्योंकि आप तो बैठे हैं, ये मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, आप सर्वे बेस्ड रिसर्च कराना पसंद करते हैं. बेटा एक क्वेश्चन बना ले, ये एक मॉडल है रिसर्च का, इस मॉडल को सामने रख ले और कर ला और साइन करा, पीएचडी एमफिल एमफिल और जा, है ना. वो डाटा कैसे कलेक्ट कर रहा है, किस तरह कलेक्ट कर रहा है, उसकी क्या सेंसिटिविटी है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न. और ये खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के LIS डिपार्टमेंट का हर डिपार्टमेंट इस काम में इन्वॉल्व है. और जिसने किसी ने मेरे जैसे आदमी ने हिस्टोरिकल रिसर्च करने का प्रयास किया है ना, उसको इतना मारा कि उसने हिस्ट्री की उस किताब को एक ऐसे रैक में लगा दिया कि वो देख ही ना पलट कर उसको कि ये भी एग्जिस्ट करती है. व्हाट से रंगनाथन
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर रिटर्न है। क्या है? से वाई जीबीपी रेडियो टॉक इन अप्रैल 1956 सेट एन अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी इन द फर्स्ट 4 periods, that is Vedic, Buddhist, medieval and Muslims, must necessarily depend upon the historical research. This has not yet been done. अगर मैं आपसे कहूँ ना कि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी पे कितने लोगों ने काम किया है, फिंगर्स पर आप काउंट कर सकते हैं। सुबोध कुमार मुखर्जी, अजीत कुमार मुखर्जी, both from Bengal, the place from where the freedom fight for the freedom of this country was on big flow. These two. Then there was a third person who was not Bengali, but he is brought up for his professional career from Bengal itself, and that was Yogesh Mishra. And if you look at the international people who have done, David Johnson and D.N. Marshall, and then after R K Bhatt. The scientific art of writing this. I am not reading this all, it consumes a lot of time. But these are certain kind of sources आप पढ़ सकते हैं, आपकी सैकड़ों निगाहें लगनी है, आपने धीरे पढ़ भी लिया होगा, जितने मैं बात कर रहा हूँ. These are the type of source material which is used. These are the libraries which were famous in the ancient times. आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट अवेलेबल है. आप पढ़ सकते हैं तत्वा के बारे में, नालंदा के बारे में, हमारे में 3-story बिल्डिंग नालंदा की. थिंक ऑफ इट. आज मैं आपसे बात करता हूं, क्या आप मुझे 2-4 ऐसी लाइब्रेरी के नाम बता सकते हैं जिनकी लाइब्रेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो? तो मुझे लगता है शायद, मुझे तो एक ही पता है, JNU, और शायद आपको पता है तो मेरा ज्ञान वर्धन करें. अदरवाइज ज्यादातर लाइब्रेरी आप पाएंगे कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है. मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बैठने के लिए दिए गए पोस्टर की बात नहीं कर रहा. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंशिएंट टाइम में नालंदा की लाइब्रेरी 3 story building, and they all were known as what? Dharamganja, that is city of art, and the name was Ratan Sagra, Ratan Dhati, and Ratnaganja ka. These were the, and it is 9 story building. 9 story. अगर 8 फुट की भी एक स्टोरी हो, अगर मैं मान लूँ, हो सकता है उस टाइम तो जमीन की कमी नहीं थी, उसी और रंगानाथन ने जो डिजाइन दिया है, अगर मैं उस पर जाऊँ तो आप उसकी हाइट देखें दिल्ली के सेंट्रल हॉल की आकर, तो आप पाएंगे कि 80-20 फुट. तो 9 स्टोरी बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग रही होगी, और कितने साल लगे होंगे उस टेक्स्ट को बुझने में, जो तैमूर लंग ने आग लगाकर उस कल्चर को, उस सिविलाइजेशन को, टेक्स्ट को खत्म किया. एविडेंस इज दैट. देन दीज आर अदर लाइब्रेरीज व्हिच वर फेमस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बट we are not talking of the ancient history, medieval history in today's talk, because we are talking of something about the Azadi ka Amrit Mahotsav. That is, we are talking something about the development of libraries after freedom, that is 1947. See, when we talk of the medieval libraries, only one bazaar in Bihar, there is one college reference हमें मिलता है कि एक कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में, बिरदार में कॉलेज लाइब्रेरी होती थी, 3000 के आसपास कुछ किताबें थी. पूरी मेडिवल हिस्ट्री आप उठाकर देख लो, NN लॉ की किताब देख लो, RC मुजुमदार की किताब देख लो, ईश्वरी प्रसाद की किताब देख लो, और किसी भी हिस्टोरिकल ऑथर की किताब देख लो. आप अगर मॉडर्न हिस्टोरियन में अगर आप बात करें तो इरफान हफीफ की किताब उठाकर देख लो, या आप वो है, क्या नाम है उसका, ओनली you get the record whether the library existed with the from the text written by the foreign travelers. किसी ने लिखा, आपके फाइयान ने लिखा, है ना, और मैगनेसिस के टाइम में जो भारत में आया, और ऐसे जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने जो टेक्स्ट में लिखा, वहाँ से ये रहता पता लगती है. औरंगजेब मुस्लिम लाइब्रेरीज सिर्फ मुगल कोर्ट्स में मुगल लेडीज के पर्सनल कलेक्शन के बेसिस पर, बट देयर इज ए रेफरेंस ड्यूरिंग द हुमायूं. इट इज हिस्टोरिकल टेक्स्ट से ही डाइड व्हेन ही फॉल फ्रॉम द लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत लाइब्रेरी, व्हिच ही कैरिड अवे टू दैट. सो इफ द दिल्ली सल्तनत लाइब्रेरी वाज देयर, इट्स रेफरेंसेस समटाइम you find in the poetic tracts which were written by the Amir Khusro. Amir Khusro, when this Muhammad bin Tughlaq died, he wrote that Gauri padi
जमीन पर सर पर बांधे के चल चल खुसरो घर आपने अब देर भई अंधेर. And he was trying to say that the biggest lover of books is no more now. He has passed away. And that library was Satnath Library. And Amir Khusro happens to be the curator of the library. At that time, the terminology was not the library to be used. The curator happens to be the person. And who was the curator? None other than the highest reputed writer, poet. Amir Khusro was the curator of that library. आइए जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था, एक थोड़ा सा दृश्य आप देखने का प्रयास करें. आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो कमेटी, वो कमीशंस, वो डेवलपमेंट्स की बात हो रही है. आज़ादी से पहले 1947 से पहले आप देख रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई. भारत हिंदू यूनिवर्सिटी 1792 में बनी, 4 मिलियन कॉलेज 1800 में बना, चार्टर 1813 में बना, सैनपुर कॉलेज 1818 में बना, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1840 में बना और बुक डिस्प्ले 1854 में. ये इतनी सारी बातें, ये जो घटनाएं घट रही थी, जो सारे विश्व में ये बात दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि इंडियन आर अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड. वी आर हियर टू गिव देम सिविलाइज्ड लाइफ. वी आर टीचिंग देम सिविलाइजेशन. We are teaching them culture, and therefore we are making education as a path of it. And what was happening? Don't you think that whatever development was taking place, that is the result of the kind of freedom movement was taking place in other side? आप देखिए 1757, 1764, 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बना दी. 1857 क्यों वो 3 यूनिवर्सिटी बनी? जब गदर हुआ, जो रिवोल्ट हुआ. क्या आपको नहीं लगता कि ये वो समय रहा जब आजादी की मुहिम में लिप्त लोगों के द्वारा ब्रिटिश मानस को चुनौतियां दी जा रही थी? इस बात का एहसास कराया जा रहा था कि हम अब आपसे मुक्ति चाहते हैं, हमें नहीं कराना अपने आप को सिविलाइज. हमारे भारत को छोड़ो, जाओ और हमें आजादी प्रदान करो. तो क्या कहा गया? नहीं नहीं नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं आपकी. माय डियर फ्रेंड, these universities and their collection that have not seen the day of light in terms of the college and the universities at par with the Britishers. आप कॉलेज रिपोर्ट पढ़ें, आप थॉमसन रिपोर्ट पढ़ें. For them, the college and universities happen to be the place where the libraries were treated on the top of the education system. Why not here? आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक भी टेक्स्ट, एक भी वर्ड किसी किताब में लिखा नहीं मिलता कि 1857 में स्टैब्लिश की जाने वाली इन 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइब्रेरी भी स्टैब्लिश हुई, या लाइब्रेरी के लिए भी किसी प्रकार का स्पेसिफिक ग्रांट दिया गया. क्वेश्चन उठता है क्यों? तो क्या कहीं ना कहीं आजादी के लिए होने वाले सत्ता संग्राम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए किस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे थे ब्रिटिशर्स द्वारा? दे वर वेरी क्लेवर पीपल. ये थॉट की बात है, ये एक इतिहास के रिसर्च की बात है. इफ यू डू द रिसर्च, इफ द हिस्टोरियंस look into this kind of aspect, they will be able to really correlate that whatever educational development for faith what were claimed to be by the Britishers was something related to crush the feelings and assertion of the freedom movement in this country. अंडर कमीशन 1882 में आता है. 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और वो मैं आप नहीं करते तो इंडियन नहीं करता, ह्यूम करता है, एक ब्रिटिशर करता है. एक ब्रिटिशर की आत्मा जागती है और ये महसूस करता है कि देश के अंदर पिछले 100-150 वर्षों से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर इस देश का खून चूस रहे हैं, यहाँ के लोगों का खून चूस रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो 1885 के अंदर 1882 में हंटर कमीशन गवर्नमेंट लाती है, ब्रिटिशर्स लाते हैं जी, और 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है. यूनिवर्सिटी एक्ट किया जाता है, रैली कमीशन 1902 और यूनिवर्सिटी कमीशन 1904. दे वर नॉन एज एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और क्या रिजल्ट रहे? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया. Why the Britishers need to have the division of the state? Reason being it, Lal, Bal, Pal. They were the 3 national leaders who have created Nationalism British state, and they were in the situation they wanted to keep the Bengal
from one portion of Bengal, which was the hub of the freedom movement activities, separated from the rest of the part of this country. Then Calcutta Commission 1917 में और मॉन्ट्रियल सेल्फोर्ड रिफॉर्म 1919 में आते हैं, तो 1914 में क्या आ रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रही है 1914, यानी कि मीन्स कि दे वर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर एंड दे डिडंट वांटेड दैट दिस काइंड ऑफ freedom movement which was taking place should get up more vigorously, and at the same time they were saying, look, we are doing everything for the education development for the people. मगर अगर आप नहीं माने तो हम क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग एक्ट 1914 लेके आएंगे और प्रेस की आजादी पे रोक, और 122(a) के तहत आपके राजद्रोह का मुकदमा करेंगे और आपको अंदर डालेंगे। कितने राष्ट्रवादी नेताओं को, कितने फ्रीडम फाइटर्स को पता नहीं कैसी कैसी जेल में। आज भी हम अपने बच्चों को कहते हैं काला पानी, आज हम उस काला पानी को LTC लेकर और घूम के देखने आते हैं, लुक, ठीक है। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते वो कोठरी जिसमें वीर सावरकर ने अपना जीवन गुजार दिया, वो कोठरी जिसमें ने कितने लोगों को काला पानी की सजा देकर ब्रिटिशर्स ने दफन कर दिया, उसकी दीवारें क्या कहने का प्रयास कर रही हैं, हम उससे क्या सुनने का प्रयास नहीं करते, हम तो उसे एंजॉय करने के पर्पज से देखने जाते। मैं भी कहना, मेरे बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और मेरे दिमाग में ही चल रहा था, यार क्या हालत हुई होगी इतने छोटे से कमरे में, यार कैसे गुजारा करता होगा कि मूव भी नहीं कर सकता, सही तरह लेट भी नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1920 में इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असहयोग आंदोलन, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वाज लॉन्च, एंड देन इन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट इज सिविल ओबीडियंस मूवमेंट टू प्लेस, और 1939-1945 देयर वाज अ सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड व्हाट वाज हैपनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नहीं देखो, अब आप सिविलाइज हो चुके हो, हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज खोली, हमने आपको ज्ञान दे दिया है, आप कॉम्पिटेंट हो गए हो, चलो हम देखते हैं कि आप राज्य चला सकते हो। तो 1935 के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज गिवन अस द एक्ट अंडर विच 3 प्रोविंसेस में स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, बंगाल में आपको अपनी गवर्नमेंट, राज्य सरकार बनाने का मौका दिया, और सारे जितने भी नेता थे उनको रेडिया बांटकर उनका ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन से भ्रमित करने का प्रयास किया, एंड दैट वाज द रीजन दैट देयर वाज अ डिफेक्शन ऑफ पीपल। दी कांग्रेस में भी दरार पड़ी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए अपने लोगों के साथ, और महात्मा गांधी और नेहरू अलग हो गए। तो दैट डिवाइड एंड रूल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी वाज डिवाइड एंड रूल। इट इज बीन सेड कि जब सुभाष चंद्र बोस ICSI का एग्जाम देने बैठे और ऐसे आया व्हाट इज द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, एंड दैट फेलो जस्ट रॉट डिवाइड एंड रूल, एंड द ब्रिटिश एग्जामिनर सेड टू फाइंड आउट हु इज दिस मैन, दिस इज द मोस्ट डेंजर पर्सन फॉर द ब्रिटिश राज इन दिस कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। दैट इज द सिचुएशन। नाउ ऑल दिस सेंसर एक्ट्स 124 में आपको पहले बता चुका हूँ, दिस ऑल माय डियर फ्रेंड, ये इतिहास झांकने के हमें पता लगता है कि वो 200 साल का वो ब्रिटिश राज, उसने हमारे साथ क्या किया, हमें क्या दिया, हमने क्या खोया। अगर आप सेक्रेटरी मेजर के रूप में इधर नहीं झाँकेंगे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि दरअसल जितनी आराम कुर्सी पे आप बैठकर, टाई लगाकर, AC में बैठकर ये आप कर रहे हैं, कितनी कुर्बानियाँ हमारे फोरफादर्स ने हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए दी। मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पर बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आज़ादी के महोत्सव के साथ साथ हम 100 ईयर्स सेलिब्रेटी ये मना रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार का डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ। तो ये डेवलपमेंट अगर मॉडल है तो सारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट रहा होगा, और अगर ये सारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुआ है तो लाइब्रेरी ग्रोथ पैटर्न को आप एसेस कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। कॉलेज सिर्फ 3 थे 1922 में, आज 90 कॉलेज हैं। फैकल्टी सिर्फ 2 थी, आज 16 फैकल्टी है। डिपार्टमेंट केवल 8 थे, आज 86 डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट 750 से आज 6,06,228 स्टूडेंट्स हैं।
बजट खाली 40,000 रुपये से यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, आज 8.8 करोड़ बजट है। लाइब्रेरी में मात्र 1380 किताबें थी, आज की डेट में 17 लाख 17,853 बुक और डिजिटल कलेक्शन है। और PhD 1948 सिर्फ एक अवार्ड हुआ था, और 1928 के 1958 में 28 PhD अवार्ड में थे। और आज 2022 के अंदर जब आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और सेनेटरी ईयर बना रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 802 PhD प्रोड्यूस कर रहा है। इफ इसे मॉडल मान लिया जाए और इस मॉडल को हिंदुस्तान की उन 40,000 कॉलेजेस और 1,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में देखा जाए, तो वन कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ग्रोथ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लाइब्रेरीज हैव सीन। वन कैन विजुलाइज, है ना, एक टेलीस्कोप है ना, एक कंसेप्ट है टेलीस्कोपिंग का, कि आंख बंद कर ही आप देख सकते हैं, है ना। आंख बंद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ खड़ा हुआ है ना। उससे पहले नहीं, ये पंडारा बॉक्स ना खुलना नहीं चाहता, इसका क्या मतलब है, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, चलो समय ठीक नहीं है बताने का कि वाई दिस टेलीस्कोपिंग इज बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कलर क्लासिफिकेशन बाय ह्यूमन। ओके, देन कम द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। 17 यूनिवर्सिटीज थी, 17 यूनिवर्सिटीज थी, और इन 17 में से भी 3 यूनिवर्सिटी पार्टी है बंगाल में, पाकिस्तान में चली, लाहौर की और सिंध की, और एक और थी इस्लामाबाद में, वो 3 वहाँ चलेगी। बाकी ये हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटी थी। आज की डेट के अंदर टोटल 650 कॉलेज। तो पहली बार फ्री इंडिया गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है, सफल होना है और उस मुकाम तक पहुंचना है, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करें, डेवलप करें। एंड दैट हैज़ बीन रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राधाकृष्णन कमीशन इन 1948। एंड राधाकृष्णन कमीशन studied these aspects, and the first time the libraries were considered as heart of any educational institution, and first time for the development of libraries provision for recurring grant was made. 6.2% budget was recommended for allocation, and 40 per student and 200 rupees per teacher was the recommendation of Radhakrishnan Commission provided to the college and universities for the development of their library collection. Apart from all of that, and then the University Grant Commission came into existence. Radhakrishnan Commission recommended that there should be a University Grant Commission on the pattern of UGC of England. The UGC of England is University Grants Committee. On the basis of that, it should be recommended, but a separate recommendation was made that UGC should exist only for imparting the traditional education in this country. For imparting the technical education, there should be a technical board, and therefore the AICT came into existence to look into the engineering and science and technology education in this country. Apart from that, in 1952, they have also spoken that we are talking of higher education, but we cannot think of developing the higher education system in this country until and unless the school education is being developed properly. And therefore, Mudal Commission in 1952 came, which has studied the status of schools, which was not available. No data was available because the school education system was completely crushed. As we have seen, different sabhyataएं has come, and both Bihar were there for school education, Muslim mosques were there for school education, and the students were taught at home. And in villages चकबंदी हुआ करती थी। अगर अपने बुजुर्गों से आप बात करें, विलेज के अंदर ही एक मास्टर को अनाज देकर किसान ने अनाज दे दिया, कुम्हार ने बर्तन दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, और साल के आखिर में जब बच्चा पढ़कर पास होकर दूसरी क्लास में गया, तो फिर इन सब ने अपना अपना अंश उनको दिया था गलती कराने के लिए. दैट वॉज द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल विच वॉज नॉट नॉन ऑन डॉक्यूमेंट. So commission hardly find, but commission recommended that there should not be any school library without it. There should not be any school without a school library. But it could not be implemented. Do you know why?
Why the recommendation of that Mudra Commission could not be implemented by the government? Simply because our Constitution of India has three ways of dividing this subject matter. इन्हें सूची बोलते हैं, संघीय सूची, राजकीय सूची और केंद्रीय सूची. Education happens to be the subject of state, and every state has the freedom to implement, and that is why you have seen that there are many states in which even the fifth education commission has not been implemented. The UGC, the government has made them mandatory. If you follow our terms and conditions, if you adopt each and every recommendation made by our 7th Pay Commission and implement it, only then we will take the responsibility of giving you the grant, otherwise not. But there are states, and they have taken their own decision, and that they have not done it. What is the status of Haryana? I do not know, but Haryana do have school libraries, I believe so. Haryana do have the library legislation as so. But there are other states where the school library system do not have. Okay. So UGC came 1957 में UGC का UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC लाइब्रेरी कमेटी 1957 UGC का बैठेगा. अच्छा वो है इसके अंदर 1951 में the concept of UGC conceived, but the UGC became the part of an institution by Act and Parliament in 1956. In 1956, it has become a autonomous body and started looking into three aspects. One was to provide the recurring grant for the higher education system, two to assist the technical expertise and other things, and third was to create the infrastructure facilities for the education development. Then after a lot of things have done, and you have seen what UGC has done and what UGC is doing, and all the kind of networks, Infinet, and then UGC for Digital Library Consortium, now Hindu, and all has taken place as the part of the kind of development which started taking place under the flag of University Grant Commission and Infinet. It is the only committee in this country which was exclusively appointed for the development of library under the chairmanship of Ranganathan by University Grant Committee. And all these segments were studied. We all are the part without which at their development you could not think the library profession as profession. आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर रंगानाथन के रहते हुए डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस और उसके टीचर्स को टीचर वाला स्टेटस नहीं था. जोशी जी पता है टीचर वाला स्टेटस नहीं था और डी ग्रेड माना जाता था क्योंकि वी वर रनिंग सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड अदर डिपार्टमेंट वर रनिंग द डिग्री कोर्स. So there was a huge cry why the same pay scale and structure and other terms and conditions as equal to teachers should be given to the library science because they are not running degree. That is why under this committee Ranganathan ensures that no certificate course or diploma course in the university department in the entire country will be run, only the degree course. So Bachelor of Library and Information Science and Master of Library and Information Science introduced just to give the parity among the faculty members, and the parity of library to the teacher is the next course of action which came into existence when the Ranganathan in his text has recommended that the teacher and the library cannot be separated. The library happens to be the laboratory of the teacher and the librarian's laboratory is the teaching department. In meeting understanding and coordination, both of them should work. The librarian should come in the department to teach practically and the teacher should go to the library and get the practical exposure. Studies and made recommendation for the Education Commission, Kothari Commission. 1964 में Kothari Commission came into existence. Kothari Commission was not for library development, but for educational higher development to study what has happened, what we have achieved in the past years. But Kothari Commission has also a specific chapter on libraries when they say that no college or department will be allowed to establish without the library. And the recurring grant provision was also made, and the first time 6.5% to 10% of the GDP for higher education was recommended by the government, the commission to be made available to the higher education institution. लेकिन आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं. 3.7 was the highest education budget given by Dr. Manmohan Singh when he was the Prime Minister in the first tenure. That is the highest.
Otherwise, 3.2, 3.4, 3.5 is the budget, and they had been, whenever there would have been debate, people would have been talking, and again the government would have said that in addition to education, there are other indispensable things we have to do. कभी वो कहते हैं कि हमने 2 युद्ध लड़े 61 और 66 में, कभी कहते हैं कि भारत के अंदर एड्स का प्रकोप फैल गया, स्टार्टिंग के अंदर हमने एडल्ट एजुकेशन शुरू करी, है ना, अब हमारे को कोविड आ गया। अल्टीमेटली ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि बच्चा बेचारा जिद कर रहा है कि मुझे नई पैंट शर्ट दिला दो, और बाप ये कहे जा रहा है बेटा अगले महीने के बजट में बात करियो, अगले बजट बात करियो, पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल जाता है और बच्चा उसी सभी पैंट कमीज के अंदर स्कूल जाता चला जाता है। यही दुर्भाग्य हो रहा है लाइब्रेरी के साथ, हायर एजुकेशन के साथ। हम अपने हायर एजुकेशन को आज तक मजबूत नहीं कर पाए हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल फर्टिलिटी के लेवल पर शायद डेवलप नहीं कर पाएगा। ये वीडियो प्रोग्राम है, ये आप किताबों में देख सकते हैं। यूएसए में कोई ग्रांट्स आई थी और उसके बेसिस पे हमारे ये इंप्लीमेंट 1988 के अंदर फीजिबिलिटी रिपोर्ट आई और 1991 से इंप्लीमेंट को लागू किया। और इंप्लीमेंट का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन थी कि भाई नेटवर्क क्रिएट किया जाए। हम डुप्लीकेशन ऑफ बुक्स और पीरियोडिकल में पैसा खर्च करते हैं, क्यों ना हम नेटवर्क के थ्रू इस पैसे को बचाएं और सारी लाइब्रेरीज को, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को नेटवर्क से जोड़ दें। बहुत कुछ है इंस्टीट्यूट के बारे में बोलने के लिए, 2 घंटे का एक सेपरेट लेक्चर चाहिए। दैट इज नॉट द बिजनेस टुडे टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। Then in 2005 the National Knowledge Commission came. National Knowledge Commission when came, people were very happy, thinking that it has come in the regime of Dr. Manmohan Singh. So something good for education, something good for library will happen. A lot of things, two specific recommendations for the library development were made. One was to institute a special institute of LIS education in the country. Recommendation दिखाओ कि कौन सी थी? Next. These are the 10 recommendations specifically made by Knowledge Commission, लेकिन they have just died on paper. उसमें कुछ नहीं हुआ। 2005 से हम 2022 में हैं, ये बेचारी एक किताब बनकर रहेगी और has been totally neglected. Nothing has been done in that area. Then pre-independence period में पब्लिक लाइब्रेरी का स्टेटस दिखा दो बेटा। All these libraries बहुत मुश्किल है हर चीज़ को नरेट करना। आप थोड़ा बेटा इसको ना रोक कर रखो। द पब्लिक लाइब्रेरी इन दिस कंट्री स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लोकल लाइब्रेरी। मुझे नहीं मालूम आप में कितने बच्चे हैं बैठे हैं। रंगनाथन इन हिज कॉलम क्लासिफिकेशन हैव नॉट यूज्ड द टर्म पब्लिक लाइब्रेरी। जोशी पता नहीं बात है, दे हैव यूज्ड द टर्म लोकल लाइब्रेरी। ये यूज्ड द टर्म लोकल लाइब्रेरी। इट वाज यूनेस्को फर्स्ट टाइम identified this concept and the public library manifesto in 1946 came. Then the terminology of public libraries was accepted internationally. But Ranganathan did not accept it. The reason being is that the Ranganathan 6th column classification 6th edition was not revised, and when it was revised by DRDC, it was not implemented as well, because the whole soul of column classification was destroyed by the committee which revised the 7th column classification, and that has never been used and implemented in LIS education teaching then after. The second reason which happens to be the development for public library was the library legislation. Library legislation का data दिखा दो। These are post-independence period के अंदर these are the states which have passed the library legislation and enacted it. As I told, all the states should have been covered, but the problem is the education happened to be the state subject. So only those states which have agreed in principle and wanted the literacy to be flooded in the country, they started in passing and implementing act of library legislation. Other states they have not cared for it, and that has been that the most suffered libraries in the country are public libraries. We have Raja Ram Mohan Library Foundation, which has the honors to look after the development of public libraries in India. But what Raja Ram Mohan Library Foundation is doing and up to what level they have really ensured of developing the public libraries, I do not know. But there is one act,
1854 का वो दैट एक्ट इज स्टिल इम्प्लीमेंटेड, and according to that act, any book which is published, the 4 copies of that book by every publisher will have to be submitted in Asiatic Society Library, Khudabash Library, DPL and National Library, Calcutta. Free of cost, it is mandatory to give. But I do not know how many publishers are really submitting 4 copies in that. There is nobody to make a record of it, there is nobody to have a check of it. Otherwise, the flood of books have been published in this country. If you match the figure which has been published in India and the collection of the libraries, it is just matching each other. Okay? And then, the special library status. Special libraries came into existence along with the establishment of special institutions, special organizations. They are the integral part of those institutions. You have seen that after independence, the country has witnessed the rapid growth and development almost in every industrial sector. Wherever there was, the libraries came to existence. Then specialized institutions like DRDO, BAR, TERI, institutions, specialized institution organization came into existence, led to the development of special libraries in this country. I have tried to give you the what mentioned libraries of special libraries office. There is no specific definition which can be accepted as far as special library is concerned. A special library can be special library in terms of its collection, in terms of its services, in terms of its clientele. Nobody in the world has given one universally accepted definition of special library. That is unfortunate segment of this. Even IFLA or even FID or even UNESCO, they were not able to really give one definition. Only the categorization by these characteristics of special library has been termed for that one. We are the special library which was currently a chronological list of that is being given. आप उनको ब्राउज करके थोड़ा थोड़ा दिखा दो जरा, जो बच्चे देखेंगे पढ़ने पढ़ते तो मैं इनका नाम तो पढ़ूँ, बेहतर ये है कि आप ही पढ़ लें. Then comes the National Education Commission to the East and Libraries. Lot of discussions and comments are taking place. Almost everybody is saying in the National Education Policy of 2020, there is no chapter, there is nothing which is written about the library. Yes, I agree. But those who are saying they are wrong. Reason being is that it is not always expected that the role of mother continues to be told with the all achievement of a child who has achieved good. But the child cannot grow to achieve something until the mother who has played the role. There are 2 segments in part 3 of the National Education Policy. I would have given a separate lecture on it. See, one is technology use and integration and online and digital education, ensuring equitable use of technology. Can you think of digital without digital resources? Are you able to impart a digital education in this country? And who will be the custodian of digital information resources? Who will develop? Here is the necessity of developing institutional repositories and digital content. In the second one is one is technology user integration, another is online and digital education ensure equitable use of technology. You have to design the customized LIS product and services in the digital environment and fulfill the gap and imbalances which have been created and help the readers to access those kind of information resources 24/7. And these two segments are to be achieved in the National Education Policy by launching one, the online courses like massive open online courses MOOC, using Swayam platform and designing and developing digital resources and disseminating them for extensive use in online environment. This is what the National Education Policy speaks for. Okay? Or the last is conclusion. In conclusion, one can find the glorious history of libraries can be traced back to ancient era when our forefathers learned the art of communication and writing, penned
the information, knowledge and wisdom in the form of fact and manuscript, which carried the legacy of traditions, customs and knowledge from the generation to another generation. The second is the journey of library also flourished in the medieval era through the invaders inherited major portion of our knowledge legacy, but became awakened and curious to rely on and learn the basis of knowledge gradually. Third, the highlight of such sources has been the emergence of common man, whose era it is. Popularization of knowledge has been the dominant theme, made possible generally by the fundamental government reorganization, securing and administrative basis for a nationwide library service. The democratic idea of equal opportunity of education and provision of book for all has seen the provision of the earth for the extensive establishment of public library, academic library and special library. And fourth, the highlight of such forces has been emergence of common man, whose era it is popularization of knowledge has been the dominant theme, made possible generally by the fundamental government reorganization, securing and administrative basis for nationwide library services. The democratic idea of equal opportunity of education and provision of books for all have seen the creation of the art for the extensive establishment of public library, academic library, technical libraries. The library movement in India in real sense is connected with the effort of Shyam Rao, Claggot III of Baroda and W.A. Gordon in 1911, and the legacy and the path which was led by them by creating the organization of India paved the way for the development of all types of library in this country. This momentum continues in India after 1947 when three governments seriously took initiative in the development of library system and the constitution of several committee and commissions related to the spectacular growth of higher education system and library in India. In fact, in this festival, the country has seen the growth and development of all the sectors, flourishing of man's intellectual, scientific, technical and cultural activities which have been sustained throughout the preceding ages, and thus India has witnessed the spectacular growth in all fields of knowledge. Therefore, when we are celebrating 75 years of independence, we feel proud in celebrating these several events in the entire country under the flag of Azadi ka Amrit Mahotsav. With these things, thank you very much.